I'm sorry, this is their national security, what shall I say, their capabilities in terms of how to handle national security has been a little dim. Because also this, by the way, is another thread in this whole Khalistan thing. There's a very, very strong Chinese community in Canada who have been, and in Chinese community, I don't want to say these people, but Chinese hand, I'd rather say that, who have been trying to influence Canadian politics. Okay. Right? So I wouldn't put it past a bunch of people to try and spoil relations, because this is like going on, trying to keep an issue alive. I mean, supposing none of these attacks happen, the news would move on. You would move away from Arjit Singh Nijar and all the rest of it, and a lot of other things. Here you're keeping the issue alive. Dr. Karta, we have run out of time, unfortunately, but I do want to say thank you for taking out the time to bring us that context. Okay, with that, we are drawing our show to a close. Thank you for joining us right here on CNN News 18. Next, my colleague Anusha Soni joins you at 5. Good evening, hello and welcome. You're watching The Nation at 5. I'm Anusha Soni. Our top focus this hour. Ayodhya is all decked up. Well, not just for the celebrations, but there is a massive push by the union and the state government to ramp up infrastructure in the temple town of Ayodhya. 11,000 crore worth of investment and new projects. That's what Prime Minister Modi is going to inaugurate. A new airport, a new railway station, a completely refurbished railway station, multiple new trains, a new residential facility that's going to be a new township that the Prime Minister is all set to inaugurate. All these projects, the facelift of Ayodhya only points out that the construction of Ram Temple in Ayodhya has ushered in a new era and a new time for the temple city. Let's have a look at some reactions, at some reports coming in from Ayodhya. Now behind me you see, this is how the decoration of Ayodhya has been done. So this is an entry point to Ayodhya. This is right next to Lata Mangeshkar Chowk. These are the pillars, and these pillars are Surya Stamp. Now these are black pillars with this burnish on them. This is the Surya Stamp. So this is how the decoration has been done in Ayodhya. So time a devotee will enter Ayodhya, he will feel the vibe of Ayodhya city. And also there is a lot of relevance of Surya Stamp in Hindu mythology. Then, in fact, there is a bike rally which is going on here. Would go and talk to these young people, those who have come here and have gathered here at Lata Mangeshkar Chowk. सर ये बताइए, आप लोग मिलेट्स, इंटरनेशनल मिलेट्स को लेके कुछ रैली निकाल रहे हैं एयरपोर्ट तक, क्या है वो एग्जैक्टली? सर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हाँ। हम आज हमारे दैनिक जीवन में जंक फूड खाने से हम लोग कितना बीमार हो रहे हैं, कितना परेशान रहते हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अब जवान लोगों को भी हो जाता है। तो इसको देखते हुए एक अच्छा मैसेज लेके आप लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री के आने से एक दिन पहले आप लोग इस तरह की बाइक रैली निकाल रहे हैं, क्या माहौल है प्रधानमंत्री के आने से पहले का? प्रधानमंत्री जी के आने से पहले अयोध्या का माहौल तो बहुत ही खूबसूरत, हर बार बदल जाता है, जब हर बार बदल जाता है, ये तो श्योर सी बात है। हाँ। लेकिन आने के एक दिन पहले रैली निकालना, हम लोग 2023 में कंटिन्यूअसली इसका प्रचार कर रहे हैं मिलेट्स का, हाँ। जिससे हमारे देश में जो एक उल्टे सीधे चीज खाने से बीमारी हो रही है, तो हम एक ट्रेडिशनल जो आहार था हमारा खाने का, हम उसमें जा रहे हैं जो पूर्वज हमारे किया करते थे, जिससे हमारी दैनिक जीवन में जो भी बीमारियां हैं उनको, इसका भी प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री जी ने किया है। मिलेट्स को विश्व तक पहुंचाया, घरों घरों तक प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया, जो रीब्रांडिंग कहते हैं मिलेट्स की, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को प्रधानमंत्री जी ने दिया। सर ये बताइए कि अयोध्या को तो बहुत सौगात मिल रही है, 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, मतलब जो राम भक्त पहले खराब सड़कों से होते हुए रामलला के दर्शन के लिए आता था, जो राम भक्त पहले स्टेशन पर तकलीफ उठा के रामलला के दर्शन, अब एक अच्छा 5 स्टार स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, कैसे देखते हैं इस परिवर्तन को? ये बहुत अच्छा ही सौभाग्य है यहाँ अयोध्या वासियों के, पूरे देशवासियों के लिए है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जी जो हमारे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये विश्व लेवल का मैटर है और
सभी लोगों का आस्था है ये। और यहाँ जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, जितने रोड चौड़ीकरण हो रही है, इससे आने वाले समय में जो भी भक्तगण आएंगे उनके लिए बहुत ही एक बार नारा हो जाए जय श्री राम का, एक बार और। Look at the excitement, you know, and this is not only about religion, this is about development happening in Ayodhya, this is about the transformation happening in Ayodhya. Preparations are in full swing ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Ayodhya, and this is the fleet rehearsal that you are seeing in the visuals as of now. VJ Pramod Saklani is showing you the visuals. This is how Prime Minister Modi's entire cavalcade will come, and this is the kind of preparation, in fact the practice that is going on, the kind of obstacle that can come, and the kind of the whole area, the sanitization and the kind of security challenges that can arise. This is what the practice is, and the security officials, in fact the staff that is working in this particular practice will make sure that nothing, in fact, as a barrier is coming in the visit, and the practice will make sure of that particular thing. This particular station, in fact, the entire building is behind me, Ayodhya Dham Junction. This is going to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi tomorrow. And ahead of that particular visit, ahead of that particular inauguration, security officials, in fact, the officials from Indian Railway, Northern Railways, are making sure that they are taking care of each and everything, from station to trains and to passenger amenities and passenger services. Everything is being taken care of. Once again, if I can show you the visuals of the building of the entire railway station, this redeveloped railway station with first phase, the budget was around 240 crore. In fact, the name has been changed just one day back, Ayodhya Dham Junction. This is the place from where in future we are going to have all the trains connecting this Ram ki Nagari to the entire country. Tomorrow we are going to witness the inauguration of this newly built building, station building. You know, initially the station used to be called as Ayodhya Junction, but now it is Ayodhya Dham Junction. In fact, I'll try to show you the changed signboards, Ayodhya Dham Junction. This station and the building is going to play a crucial role in all the rail projects that we are going to witness in this particular area, because not just this redeveloped building, but we are learning that rail projects worth of 2,300 crore will be, seeing some sort of inauguration or, foundation stone by Prime Minister Narendra Modi tomorrow. As of now, I'm showing you this redeveloped building where you have three-story building by Northern Railways of Indian Railways, and in fact this building has been developed in such a way that every corner of this building will give you a feel of Janam Bhumi of Bhagwan Ram. And this is what in fact people are saying. We are learning that tomorrow not just this inauguration, but Prime Minister will flag off at least 8 trains, 2 Amrit Bharat trains and 6 Vande Bharat from Ayodhya to Delhi, and then 1 Amrit Bharat from Ayodhya to Darbhanga that will go to Delhi as well, and then 6 other trains. So tomorrow Ayodhya is going to get this redeveloped building and also 8 trains connectivity with Ayodhya railway station and trains in multiple areas throughout the country. Well, the visuals on your screen right now, it's a historic moment when there is a peace accord which is being signed between the union government, the central government, the Assam government and ULFA, or also called ULFA. Sources have indicated that the top 2 leaders of this group have been in the national capital since the last week. Final touches to this peace agreement has been given. Government interlocutors have been involved. All these efforts to ensure that the northeastern state of Assam remains peaceful. It is an
important, significant step in restoring peace and normalcy in different parts of the northeast. In Assam, for decades, there are parts of Assam that have been stuck in insurgency. This kind of deal was also, signed with various other states. In the state of Manipur as well, there and ULFA, which is a part of it. What does this accord really entail? As we told you earlier, the three crucial parties which are involved here include United Liberation Front of Assam, the central and the state government. It has been signed, the visuals on your screen right now, and it aims to end the decade-old insurgency in the northeastern states. My colleague Preeti and Payal both are joining us on the broadcast. Payal, first to you, how crucial and critical is this deal? Of course, very important, a very important step, like you mentioned. Anisa, it's important to understand that the people of Assam have been looking for this peaceful situation for decades together. Assam has had a history of insurgency, has had a history of violence to it, and that is something which was committed by the Narendra Modi government from its inception as well. And that's the reason the peace process, the securing of the borders is something which has been there, and of course, Himanta Biswa Sharma now committed to it. There are various talks that have been happening at multiple levels. That is something also which is being worked around. And today is a historical day in the history of Assam, where Union Home Minister Mr. Amit Shah is seen in the visuals. He's sitting there in that meeting. Of course, there's Himanta Biswa Sharma. There's also officials from the Assam government. There are the Ulfa persons who are also there as well. Also, very significant one person present over there is also GP Singh. GP Singh is currently the DGP of Assam. He's been somebody who's been has been part of the active police system in Assam for many years. He's seen many of these insurgencies really hit Assam and the consequences thereof. So obviously, it's a very important step. And like I've been saying, that it's been a commitment of the Narendra Modi government to ensure a peaceful northeast region and ensure a peaceful Assam, because Assam is a gateway to the northeast. It's a very important state as far as that is concerned, because Assam shares borders with multiple states in the northeast. So that's a very important step in that direction. And if I'm not mistaken, last time when we spoke to the Assam Chief Minister, he did say that they've been given a deadline that all of these things need to take shape and Assam needs to restore its complete peace at least ahead of next year's election. So that's the commitment that the Narendra Modi government here in the center, and of course the Assam government led by Himanta Biswa Sharma. All right, let me also cut across to my colleague Preeti, who's with us on the broadcast. Preeti, what are the details you're picking up? The signing of this deal is going to be very important. Hectic negotiations have gone behind this. The state government has been very closely involved. There are interlocutors who have worked around the clock to ensure that there is an agreement that is reached between all three sides. Give us a sense that from the law and order point of view, from the internal peace and stability point of view, how critical is this peace accord which is being signed right now? From the law and order point of view, if I have to tell you, this is very much significant, because after long years of 44 years of we can say the revolution of Alpha, where they demanded for certain things, there were earlier 2 attempts to bring them to talks which however failed, and now this day has come where they are expecting for a successful signing of a peace pact with the Alpha pro-talk leaders, because in this region of Assam, a lot of people have suffered during this entire regime, this entire revolution of Alpha. A lot of people have lost their lives. Innocent people have also lost their lives in this entire process, and we have seen that a lot of families have made sacrifices where certain innocent people also had to lay down their lives in this entire process. So everybody here is expecting that now that this peace pact is going to be signed between the Alpha pro-talk leaders and the government of India, the central government, it is being expected that a decade-long age of violence, decade-long, we can say a lot of bloodshed will come to an end, because the demands that are being made by the Alpha pro-talk leaders for this peace pact are very much specific, that it must have to safeguard the indigenous people of Assam, and which is why with the cause, the safeguard of the indigenous people of we're Assam. cutting across to the press conference which is happening right now. Amit Chaji and our beloved Chief Minister, Honorable Himanta Biswa Sharma, and to all these dignitaries, it would not have been happened. We assure you all the dignitaries, and I would like to send this message to my Honorable
Most Honorable Prime Minister of the Union Government of India, Home Minister, Honorable Home Minister of Government of India, and Assam Chief Minister, Honorable Janata Dal. This accord will bring lasting peace as well as development in Assam, and we will hereby would like to confess that Let me cut across back to my colleagues Preeti and Payal, who are joining us on the broadcast, getting us more details and perspective on this accord which is being signed. We are expecting Union Home Minister Amit Shah to also make an address as this accord is being signed in just few minutes from now. Preeti, back to you. You were taking us in history. You were telling us how the so-called revolution started, how it unleashed mayhem and insurgency in parts of Assam, and cut to this date when this peace accord is being signed. Yes, in between the alpha, between the demands and the people of Assam and the central government, actually a lot of innocent people also lost their lives in this entire process, who are at least now expecting, they are the common people of Assam, they are expecting, because they also go along with the demands of the alpha, the organization, that the indigenous people should be safeguarded. But along with that, they are also expecting peace. They have waited for this peace for so long. It has been 44 years of this organization being formed. Since then they have been demanding certain things. Earlier they were demanding sovereignty. And वाइस चेयरमैन सारे लोग हमारे सिविल सोसाइटी से आए हुए प्रतिनिधि मंडल, आज आसाम के लिए और एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा आसाम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुल गृह मंत्री अमित शाह जी का देख दिखाव में हमने बोडो अकॉर्ड किया, कार्बी अकॉर्ड किया, आदिवासी अकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे, सारे लोग में आ चुका है। तीनों अकॉर्ड का अच्छा इंप्लीमेंट हुआ और तीनों अकॉर्ड से हमारा जो ट्राइबल मिलिटेंसी था ये खत्म हो चुका असम में। आज सभी मेन स्ट्रीम में है। अल्फा एक बहुत बड़ा एजिटेशन था। धीरे धीरे अल्फा ने आर्म्स को पकड़ा। एक असम का जो 1988 से इतिहास हुआ, ये इतिहास एक हिसाब से ब्लैक सेट का इतिहास रहा। काफी लोग मारा गया पूरा इस दौरान टिल 98 टिल टुडे में। एक जो हिसाब आते हैं कि ये पूरा प्रकरण में 10,000 लोगों का मृत्यु हुआ। वो इसमें इनोसेंट सिविलियन थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे और खुद अल्फा का मेंबर्स थे। सारे लोगों मिला के 10,000 जैसा लोगों का निधन हुआ। और ये सारे 10,000 लोग अगर हम सिक्योरिटी फोर्स का 200-300 शहीदों को मैं छोड़ देता हूं तो ये 9,500 और जो लोग हैं ये असम का ही था। ये हमारे असमीज लोग ही था जिसका पूरा ये 20 साल का दौरान निधन हुआ। कोई खुद भी नहीं जानते हैं कि उनको क्यों मारा गया। बहुत लोगों को अपना ड्यूटी में चला गया, बम ब्लास्ट हुआ, वो मर चुका। उनका फैमिली को आज भी ये जवाब नहीं है कि मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा को क्यों मारा गया, कोई नहीं जानते हैं। और जो लोगों को मारने के लिए बोला गया है शायद वो लोग भी नहीं जानते थे मैं इसको क्यों मार रहा हूं। ऐसा ही असम का इतिहास रहा। धीरे धीरे हिस्ट्री आगे बढ़ा। हमारा अल्फा का चेयरमैन का नेतृत्व में लोगों ने निर्णय लिया कि हम भारत सरकार का साथ बातचीत करके ये समस्या का हल करूंगा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही डिसिसिव स्टेप लिया कि हम अल्फा का साथ निगोशिएट करूंगा और ये सारे जो इश्यूज है इनको एक क्लोजर तक लेके आऊंगा।
आज इसी का ही फल है कि हमारा आज एकॉर्ड होने जा रहा है। ये एकॉर्ड का जरिए असम का जो लोगों है, लोगों का काफी सारा एस्पिरेशन फुलफिल होगा। एकॉर्ड है या एकॉर्ड नहीं है, इन जनरल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आउटरीच रहा नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए, इसका कारण असम में एक पूरा शांति का माहौल हुआ। और ये सारे जो एकॉर्ड हुआ, ये सारे एकॉर्ड का कारण ये शांति का माहौल को काफी बल मिला। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक अपना इनिशिएटिव रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को देश का साथ पूरा आगे ले जाना है। इसीलिए असम, त्रिपुरा, हर जगह में सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आज शांति का पहल हुआ। काफी सारे इलाका से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का विड्रॉ हुआ। आज असम में खाली 15% इलाका में ही आपसा है, बाकी 85% इलाका से आपसा का विड्रॉ भी हो चुका है। ये एकॉर्ड का बाद मैं विश्वास करता हूं कि असम में पूरा स्थायी शांति आएगा। और ये एकॉर्ड के लिए मैं अल्फा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ने ये स्वीकार किया, आप लोग ने ये निर्णय लिया कि भारत सरकार का और असम सरकार का साथ एकॉर्ड करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इसको पर्सनली सुपरवाइज किया कि सारा एकॉर्ड हो जाए, असम में शांति आए। मैं असम वासियों का ओर से आज का ऐतिहासिक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ में अल्फा का नेतागण को भी मैं धन्यवाद देता हूं आज का ये हिस्टोरिकल एकॉर्ड के लिए। ये एकॉर्ड में काफी सारे चीज है जो असम गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, काफी सारे चीज है जो भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, बोडो एकॉर्ड, कार्बी एकॉर्ड, आदिवासी एकॉर्ड, सारे एकॉर्ड को 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए गृह मंत्रालय ने काम किया। हमेशा हमें मार्गदर्शन मिला और असम सरकार ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे कदम उठाया। मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूं कि ये अल्फा का जो एकॉर्ड है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आशीर्वाद से भारत सरकार और असम सरकार दोनों 100% इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। मैं आज का ये ऐतिहासिक दिन में पुनः एक बार जो हमारे सिटीजन ने, हमारे असम वासियों ने ये पूरा समय में अपने आप को बलिदान दिया, मैं सारे परिवारजनों को पुनः एक बार विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सब असम को एक बेहतर प्रदेश बनाऊंगा। भारत वर्ष का अंदर में असम को एक शक्तिशाली प्रदेश बनाऊंगा और आप लोगों का जो बलिदान रहा, ये बलिदान को हमने आगे रखते हुए असम को शांति, प्रगति और विकास का ओर लेके जाऊंगा। पुनः एक बार मैं आज का ये हिस्टोरिकल ओकेजन में असम वासियों को मैं पुनः नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट करते हूँ। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में मेरे साथ उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान बल्ला जी, आर सूचना ब्यूरो के चीफ श्री डेका जी, उल्फा के सारे प्रतिनिधिगण, नॉर्थ ईस्ट और असम के अलग अलग जाति संगठनों के और स्टूडेंट फेडरेशंस के प्रतिनिधिगण और प्रेस के मित्र, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज आसाम के भविष्य के लिए
एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है। रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है और आसाम की मैं बात करूं तो 85% आसाम में से अब सपा को हटाया जा रहा है और आज भारत सरकार, आसाम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस एमओयू के माध्यम से उल्फा के प्रतिनिधियों ने सभी हथियार और गोला बारूद को आत्मसमर्पण करने के लिए, सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अतिशीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। सिर्फ उल्फा के संघर्ष की बात करें तो करीब करीब 10,000 लोग उल्फा के इतने लंबे समय के संघर्ष में मारे गए और 1979 से लेकर अब तक इधर और साइड से जो भी मारे गए होंगे वो सभी इस देश के ही नागरिक थे। आज ये समस्या का संपूर्ण समाधान हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। उल्फा के प्रतिनिधियों से बात कर भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट का पैकेज और इसके साथ साथ ढेर सारे आसाम के विकास के प्रोजेक्ट को भी हमने स्वीकृति दी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समझौते की एक एक बात का फुल स्टॉप कॉमा में टाइम बाउंड मैनर में अमल किया जाएगा और आपके विश्वास पर नरेंद्र मोदी सरकार खरी उतरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आसाम की ही बात करें तो मोदी जी की सरकार बनने के बाद घटनाओं में 87% की कमी हुई, मृत्यु में 90% की कमी हुई है और अपहरण में 84% की कमी हुई है और अकेले आसाम में अब तक 7500 कैडर ने सरेंडर किया है और इसमें आज 700 की संख्या बढ़ जाएगी। तो अकेले आसाम में 8200 कैडर का सरेंडर होना ये आसाम के लिए शांति के नए युग का सूत्रपात है। समझौते जो हुए, समझौते से समाधान तक की पूरी यात्रा को मैं जरूर बताना चाहूंगा। 2019 में एनएलएफटी के साथ त्रिपुरा में समझौता हुआ, 2020 में ब्रू समझौता हुआ, 2020 में बोडो समझौता हुआ, 2021 में कार्बी समझौता हुआ, 2022 में आदिवासी समझौता हुआ, 2022 में आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में असम अरुणाचल
अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ और अभी 2023 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का समझौता हुआ और आज उल्फा के साथ समझौता हो रहा है। मैं मानता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और विशेष कर आसाम के लिए एक शांति के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मैं आज उल्फा के सभी प्रतिनिधियों को हृदय से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो भरोसा भारत सरकार पर रखा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आपकी मांग किए बगैर ही इस सारी चीजों को पूरी करने के लिए एक टाइम बाउंड मैनर में प्रोग्राम भी बनाया जाएगा और हम गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक कमिटी भी बनाएंगे जो असम सरकार के साथ रहकर ये पूरे समझौते को पूरा करने का प्रयास करें, समयबद्ध तरीके से पूरा। हमने बोडो के साथ किया या ब्रू के साथ किया या त्रिपुरा में किया, सभी समझौतों को 19 के बाद जितने समझौते हुए हैं हम समय से आगे हैं, कहीं पर समय से पीछे नहीं है। समय से पहले ही हमने समझौते की शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक ऐतिहासिक घटना जो आकार ले रही है, उसके लिए सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इनके ब्रॉडर विजन उग्रवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के बगैर ये संभव नहीं था। असम के मुख्यमंत्री, असम के अधिकारी, हमारे गृह सचिव, डीआईबी और उनके तहत काम करने वाली पूरी नेगोशिएशन करने वाली ऑफिसरों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इस समझौते में सबसे बड़ा यश अगर किसी को जाता है तो उल्फा के प्रतिनिधियों को जाता है, जिन्होंने बहुत बड़े मन के साथ ये समझौता किया है और विश्वास रखकर शांति की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। मैं फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि समझौते की सारी बातें समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। To score a double hundred in ODIs and a prodigy in India's stellar batting order. Will Shubman Gill be the Sportsperson of the Year? To find out, watch the Indian of the Year Awards 2023 coming soon. About it is it's driven my poll numbers way up. Can you believe that? Way up. Be advised, Cal Police 1 advised they're trying to breach and get into the Capitol. Does Marlon want one? You can take as many as you'd like.
It's time for the Republican Party to unite, to come together and focus our energy and resources on beating crooked. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. To be advised, Capitol Police One advised they're trying to breach and get into the Capitol. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. Well, thank you very much. We love Trump! We love Trump! We love Trump! We love Trump! I need you all to commit right here, right now, to be a part of this movement. Take back Arizona. Support we want. They're not over. Patriots. Count the votes! Count the votes! Count the votes! Working as an engineer throughout my life, I lived by the motto that numbers don't lie. As Secretary of State, I believe that the numbers that we have presented today are correct. It's no wonder Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They're willing to violate the U.S. Constitution at levels never seen before in order to win. They will do anything to win. They'll do whatever they have, whatever they can. And remember this, Joe Biden is a threat to democracy. He's a threat. Courtroom 209 is now in session. Honorable Judge Sarah B. Wallace presiding.
All right, let's get you some more news coming in, and this is about the seat sharing agreement that can be worked out in the state of Maharashtra as far as India Alliance is concerned. Amid the rift in India Alliance over seat sharing, CNN News 18 spoke to Sanjay Raut, who reveals that Uddhav Sena will contest from 23 seats and they aren't asking for the Congress seats. He once again asked the Congress party to start with 0. Uddhav Sena and Mr. Sanjay Raut asserts that if the Congress party wants to come back in the state, they have a lot of work to do, and that's the comment once again being reiterated by Mr. Sanjay Raut. Please listen in. संजय जी, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि हम 23 देने के लिए तैयार नहीं है। संजय निरुपम कह रहे हैं कि 23 हम दे ही नहीं सकते। कांग्रेस महाराष्ट्र में कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस है ने कौन? कांग्रेस कौन देगी यहां देने वाले? कांग्रेस के पास अभी एक भी एमपी नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास आज एक भी एमपी है क्या? 2019 में सुशील कुमार शिंदे से लेकर अशोक चौहान तक सभी हार गए। कौन है? एक सीट चंद्रपुर की थी, वो भी कैंडिडेट शिवसेना से वहां गया था, हमारा एमएलए था, हमने भेजा था, उनके पास कैंडिडेट नहीं। तो क्या कांग्रेस जब देने की बात करती है तो दिखना चाहिए उनके झोले में एक्चुअली क्या है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे जा रहे हैं 3 तारीख को दिल्ली में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर डिस्कशन करने के लिए। देखिए, बातचीत होगी। हमने ये उद्धव जी ने यहाँ दिल्ली में बात किया है, जब हम भी थे, राहुल जी थे, सोनिया जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, कि कांग्रेस के बारे में अगर सीट शेयरिंग करना है कांग्रेस के साथ तो महाराष्ट्र में नहीं होगा, दिल्ली में होगा, क्योंकि यहाँ किसी को अधिकार ही नहीं है ना। कांग्रेस एक अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल की हुई पार्टी है हमारे गठबंधन में। 10 बार आप दिल्ली में जाओगे, पूछोगे किस सीट के लिए आप दिल्ली में भागम भाग करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम 2, 4, 5 घंटा दिल्ली में बैठेंगे और पूरा एक दिन में सीट शेयरिंग कर आ जाएंगे। उस मीटिंग में, उस बैठक में जो होगा वो फाइनल होगा। My colleague Preeti is joining us on the broadcast, giving us more perspective. Preeti, what is the feeler that you pick up from the Uddhav Sena? Are they, really inclined towards giving more ground to the Congress party, giving more elbow room? What are the negotiations which are going on right now? It's a totally confusion is going on in MVA between the Sharad Pawar NCP party, Congress party and Uddhav Thackeray Shiv Sena party. And as we said in an exclusive interview to CNN News 18, Sanjay Raut, the Shiv Sena MP, clearly said that we will not compromise less than 23 seats, because already in Maharashtra since last 10 elections, Shiv Sena, Uddhav Thackeray party is contesting 23 seats. So we want 23 seats and Uddhav Thackeray's party is firm on the 23 seats. Whereas the Congress leader Sanjay Nirupam spoke to the CNN News 18 early morning and clearly said that this formula is not acceptable with the Congress party. So when Sanjay Raut spoke to the CNN News 18, he clearly said that Maharashtra Congress leader doesn't have any power. They cannot decide about the seat formula. So on 3rd of Jan, Uddhav Thackeray is going to Delhi and he will meet the Congress President Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi, and they will discuss the seat formula with this both the leader. Meanwhile, the Shiv Sena, Uddhav Thackeray's party is firm on the 23 seats, whereas the Congress is not ready to give them a 23 seats. And another party is also likely to join the MVA is the Prakash Ambedkar party, and Prakash Ambedkar also give the new formula that the 4 party will contest 12 seats in Maharashtra, and this formula is also not acceptable with the Congress party. So there are lots of confusion is going on and lots of conflicts among the 3 parties going on in Maharashtra. All right, Preeti, thank you so much for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you, and if the state of Maharashtra is only a test case or a sample case, that confusion can prevail in other states as well. We'll continue tracking that story and much more here on CNN News 18 on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us. Brought to you by
We now have two standards of justice. As far as the joke of an indictment, it's a horrible thing. It's a horrible thing for this country. I mean, the only good thing about it is it's driven my poll numbers way up. Can you believe that? Way up. Be advised, Capitol Police 1 advised they're trying to breach and get into the Capitol. Does Marlon want one? You can take as many as you'd like. It's time for the Republican Party to unite, to come together and focus our energy and resources on beating crooked. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Be advised, Capitol Police 1 advised they're trying to breach and get into the Capitol. The attack on our nation's capital on January 6, 2021, was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. Well, thank you very much. We love Trump! We love Trump! We love Trump! We love Trump! We need you all to commit right here, right now, to be a part of this movement. Take back Arizona. Support We Love Trump. Back up Patriots. Count the votes! Count the votes! Count the votes!
Working as an engineer throughout my life, I lived by the motto that numbers don't lie. As Secretary of State, I believe that the numbers that we have presented today are correct. It's no wonder Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They're willing to violate the U.S. Constitution at levels never seen before in order to win. They will do anything to win. They'll do whatever they have, whatever they can. And remember this, Joe Biden is a threat to democracy. He's a threat. Courtroom 209 is now in session. Honorable Judge Sarah B. Wallace presiding. Welcome back. You're watching The Nation at 5. We continue to get you these special ground reports from the temple town of Ayodhya. My colleague Anand Narasimhan in conversation with the various saints and seers who demystify what Sanatan is about, what the legacy of Ram means to the country of India. Please listen into these exclusive conversations. संविधान में राम है, राज्य की कल्पना में राम है, रोम रोम में राम है, भारत के राम है, भारत में राम है. Why is it that Ram is so integral to our consciousness? From the Adhyatma or the spiritual perspective, from the civilizational perspective, let's ask some of those who have dedicated their life to the service of Ram and into the world of spiritualism. महंत राजू दास जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जब ये नया जनरेशन आपके पीछे हर तरफ खुशियां छा गई, जब बात राम की हो गई, राममय हो रहा है, तो आपको तो अच्छा लग रहा होगा. आप कैसे राम को देखते हैं? आपने कहा देश के कोने कोने में, हर वर्ग, हर समुदाय में राम का आस्था. मैं कहता हूं दुनिया के कण कण में भगवान राम की व्यापकता, दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे ईसाईयत के मानने वाले हों, धर्म एक सनातन, बाकी अलग अलग तरीके से जीवन जीने की शैली मजहब के